Good morning to all. I am here to welcome you all for the special webinar event on behalf of our institution, that is Hindi University, Howrah or West Bengal. Before resuming the webinar, I would like to introduce our Vice Chancellor, Madam, and our patron, of course, because our training and welfare sale has been introduced by our patron madam, that is our vice chancellor madam, and it is purely her initiative that after education and getting degree from our university, the students will be benefited. So our Vice Chancellor, Madam Professor Nandini Sahu, Honorable Vice Chancellor of Hindi University, Professor of English, School of Humanities, former Director, School of Foreign Languages, IGNOU. I would like to focus on some achievements that Madam has achieved. She has authored more than 25 books, and even I think at least 10 books are on the process of publication. She has translated more than 5 books, edited and compiled 4 books, and she has been awarded from different prestigious institutions all over our country, including Michael Madhusudan Academy Award 2024, Lifetime Achievement Award by SAFE India 2024, Gold Medalist from Gold Medalist for contribution to English Studies, and it was conferred by our Vice President of India in 2019. So this is the introduction of our Vice Chancellor Madam in nutshell. Now I will request Madam to give us some insightful visions today, and then we will go to our speaker, Madam. Okay, thank you so much, Dr. Indrajit, for this very generous introduction. Good morning, everyone, and a very warm welcome to Professor Anupriya Pandey, an eminent scholar and a professor from Indira Gandhi National Open University, my parent institution. Professor Anupriya Pandey and me, we have a very deep and long association for almost 2 decades now. Probably we started our careers together in IGNO, just a couple of years gap. After I joined, she came to IGNO. And we have worked on various projects, on various assignments. Side by side, we have seen each other growing up to become professors. And she's a wonderful person, a very warm person, very helping, loving. She is a very popular teacher among the students. She can go to any extent. She can fight for the students, for the rights of the students. I have seen her that way. And I have seen her also being very loving and caring to the teachers, the fraternity of teachers in IGNO. That is bit of personal. I can just go on and on talking about her. But to be more professional, to be more precise about her contribution to IGNO as a professor and to Indian academia in general, her background is commerce, and Dr. Indrajit will introduce her formally, of course, with all her Yes, achievements. But yes. yes, her specialization is entrepreneurship. I have heard her engaging multiple sessions in orientation courses, in refresher courses in IGNO and outside on entrepreneurship and guiding the young minds towards a better employment scenario. Because ultimately the aim of education is employment. We agree or we disagree. We may say that for knowledge, for wisdom, for knowledge systems, or getting into the higher values of life, we take education. Yes, that's for sure. Now at this point of life, we can afford to do that. But when someone is 20 or 22 years old and doing MA, MCom or MSc or BTech, MTech or probably PhD, at that time their mind is too full of employment and the anxieties thereof. During such a sensitive period, we need the guidance of mentors, and Professor Anupriya Pandey is nothing less than an excellent mentor to lots of youngsters. If you go to the website of Indira Gandhi National Open University, the world's largest university where both of us belong to,
You can see almost every week, IGNO is doing something or other for the placement of the students, for the employment of the students. Skill enhancement courses are there, entrepreneurship courses and programs are there, which Professor Anupriya Pandey and her colleagues are coordinating. Probably she will talk a little bit more about that. And when I joined IGNO in the year 2006, uh, they approached me to design some academic programs for them for skill enhancement. And at that point of time, we were thinking nothing more than functional English and communicative English, and kind of fluency in speaking and writing and preparing their resume, preparing their CV, which can be very impressive for the employer. We were thinking like those very traditional things in the year 2006 or 7 when we had joined. But now the paradigm shift is there. We can see that the students, they are much more smarter than us. Their speaking skills, their writing skills are very, very good. They are training themselves. So during such a scenario, now we have to focus and train the trainers more than only training the students. We have to train ourselves. So this is where AI, we agree or we disagree, we like or we dislike, AI is coming up in a big way. So, how to introduce our students to artificial intelligence while telling them that it is artificial? It can never replace the human brain. But at the Exactly. same time, strengthening the skills of our students, a set of skills like their skills with internet, with the use of internet. When we were small children, our parents used to tell us knowledge is power. Now, in the age of internet, the utilization of knowledge is power. How we utilize the massive amount of knowledge at our doorstep. You just open your computer or your mobile, you can see so much of information. Therefore, yesterday somebody sent me a forward. Critical ignoring is the best skill of 2026. Yes, That ma'am. got Yes. me thinking. You receive so much of information that which one to ignore and which one to actually trust and then utilize is one of the biggest challenges of young minds. For our generation, the plus point or the positive point is we know where to stop. But our next generation, probably they have to be introduced with the ideas of using their own brains and their own skills along with the artificial intelligence. And of course, by strengthening their skills in speaking and writing multiple languages, and in our case, probably today in Hindi University, Professor Anupriya, you would be happy to know that we are a university catering to the needs of multiple languages and knowledge systems. We have MA in Hindi, we have MA in Translation Studies, in History and Political Science. Dr. Indrajit is an excellent scholar and he has been doing good work. So that is how the training and placement responsibility is given to him. So they are doing whole lot of academic programs, and now we have approached the higher education department to facilitate us to introduce a few more MA courses which are technically approved, and we are moving slowly towards those like MA English and MA Gender Studies, MA Folk Literature, and then Diploma in Translation Studies. Translation is coming up in a big way. That is Yes. also one part of our approach to employment. In India, there are 22 scheduled languages and also there are our official languages. We are planning to introduce MA programs in all the scheduled languages of India apart from folk languages and tribal languages. And the moment we get signal and positive signal from the government, we will also introduce commerce and science subjects in our university. So we are taking those baby steps towards our overall growth and development. And introduction of a training, placement, and students welfare cell is one such step, as very baby and small step by in the university where you are contributing with your vast experience in entrepreneurship and guiding the younger minds towards employment and other such skill enhancements. You are the inaugural, you are the first speaker for our training and placement cell, and we are ever so privileged, ever so Yes. grateful to you for accepting our invitation to join us to guide our students. I'm sure that in near future, our students will constantly get in touch with you through Dr. Indrajit.
They will not trouble you by making phone calls, but they will certainly get in touch with you through Dr. Indrajit via email or whichever platform is most suitable for you, so that you can guide our students from the state of West Bengal to be national and international. Once again, a very warm welcome to Professor Anupriya Pandey, an eminent scholar, one of the best brains in the country, to be a part of Hindi University. Thank you and welcome. Thank you, ma'am. It's a pleasure Thank you, ma'am. to Thank you. be with you. Anything for you. Yeah. At any time. Yes, ma'am. Now, ma'am, we are ecstatic to have our chief guest and speaker, Professor Anupriya Pandey, madam, who has joined us today to share her research work. The topic of the webinar is definitely shaping the intangible ability, soft skills for career and life, which is centered around career and personality development of learners or students. Before going to the stage, I would like to introduce Madam Dr. Anupriya Pandey, Madam, Professor, School of Management Studies, IGNOU, New Delhi. She is a renowned and erudite scholar. She has 25 years of experience in teaching, training, research, and consultancy in the institutes of repute, such as Madan Mohan Malviya Technical University, Entrepreneurship Development Institution of India, etc. Madam has conducted several national and international level training programs for teachers and trainers, which includes 2 weeks National Faculty Development Program, that is FDP, in entrepreneurship, supported by NSTEDB, Department of Science and Technology, Government of India. Today, she will share her insights on her valuable research work. Too. Students and participants will learn to apply these strategies to build your career and to shine in your life by personality development. Please join me in welcoming our chief guest and speaker and erudite scholar, Professor Anupriya Pandey, ma'am. Please, madam, now the webinar stage is yours. Thank you so much, Dr. Indrajit, for such a lovely introduction. I don't know whether I deserve it or not, but thank you. I would keep this introduction. This is not purely my research work. I have just tried, considering the first session of the webinar, I have tried to give an overall picture as to how the job industry is moving and what all is necessary to be able to be wanted by that particular, by the industry, right? So I have kept it general. Yes, I have supported, because whenever we talk of soft skills, no, since they're intangibles, yes, people think it is simply bhashan. Believe me, it is not bhashan, and we will see several research, that has been conducted that will substantiate the fact that why this has become a buzzword nowadays. Just to make, a little easier, because I assume since you are recording the session and you can use it later, you can distribute it to the students also. So I would be very simple. I would start with a story, a small story, and then we will move forward. And if there is a need, maybe we can have several sessions on each of the aspects one by one. Yes. Later, right? Sure. So let me begin with the very small story, and then we'll move forward with the session. Just imagine a waiting room, and there were two candidates waiting in that room. The name maybe, let's say, Rohan and Priya. They sat flipping through magazines, each confident in their own preparation. They were vying for the same job at a publishing house, and their qualifications were almost identical. They both had masters in Hindi from reputed institutions, and both had around 5 years of experience in the industry. As they waited, they couldn't help but notice the subtle differences in their approach. I mean, people were watching. The Rohan was busy checking his phone, rehearsing his answers, while Priya, she was practicing her smile and body language in front of mirror. When Priya's name was called, she walked into the interview room with a confident stride, greeting the panel with a warm smile. She answered questions with ease, maintaining eye contact and articulating her thoughts clearly. When asked about her strengths, she talked about her ability to work under pressure and her excellent communication skills. Rohan,
On the other hand, he walked with a more casual demeanor. His phone was still clipping in his pocket. He answered questions confidently, of course, but his responses were more focused on his, hard technical skills and less on how he would fit into the team. As the interviews concluded, the panel, of course, they thanked both the candidates and they promised to get in touch with them soon. The next day, both of them, they again went there to get the results. The results were announced. Priya was selected for the job. Rohan was stunned because he was also excellent in his technical skills. And he was just wondering, how did this happen? We had similar qualifications. So what made the difference? He was just wondering. And while he was still wondering, the HR manager smiled and she appeared, she smiled, and she handed over Priya the offer letter and said, "Your soft skills, Priya, made all the difference. You presented yourself confidently, showed enthusiasm, and demonstrated excellent communication skills." Rohan, on the other hand, since he asked, "Ma'am, what went wrong with me? I also possess the same degree with the same institution, and I also have the same experience. So what went wrong with me? I would really love to know so that I can work upon it." And she said, "You are more focused on your technical skills, which although was impressive, but you couldn't show your ability to work with the team that we already have in our publishing house." As Priya accepted the offer, Rohan realized that in the world of career growth, soft skills are just as important as technical expertise. So if we try to, just think or try to understand what was then there in the story, it's a very simple story. Yes. Hypothetical though, but we have substantial researches from even Harvard Business School, right? To show how soft skills are emerging. And they are the new, skills, new set of skills, which are preferred, especially after Corona, if I say. They are preferred in the job industry, job market, right? Again, I would just say that I would try to keep this session bilingual to make it more meaningful for the students who can understand Hindi, or English, or just to benefit the student by and large, I would try to keep it bilingual wherever necessary, right? I hope this is okay. So now I'll try to make some presentation and we'll just go through some of the things which are important so that you can understand why these skills are important and what are those skills that are important, right? Just let me share this presentation. Pavani, can you please help me with this presentation? It is not showing here. Just wait a moment, please. Sure, ma'am. Sorry. So as I said, the story may be hypothetical. The story may be very simple, but it is not just a story. There are certain evidences, there are certain researchers that show that how these soft skills are and how important they are in our life. In a research by Harvard Business Review, they analyzed large-scale US data on over 1,000 occupations across industries from 2005 to 2019, including 17 million job transitions, capturing hundreds of skills. They captured all sorts of skills, technical, non-technical, hard skills, soft skills. We'll try to understand what these hard skills or soft skills are and why are they called hard skill or soft skill. We'll try to know during this session, right? In this study, what was found that individuals who achieved high scores on soft skills were more likely to earn higher wages throughout their careers. And they had more chances to advance to the higher roles.
and they were more likely to acquire specialized skills more rapidly and demonstrate greater resilience to industry-related changes. I'm just showing certain, studies that have been conducted, which are important, so that you can understand why the soft skills are becoming a buzzword nowadays. The presence and development of soft skills, the study stated that it not only increased the competitiveness of workers for entry-level positions, but also influenced their ability to advance in their careers. If you see further, the researches that were done, it was not only conducted to understand whether what kind of skill sets are important. They also wanted to give certain suggestions or help the top-notch leaders, to understand what is the value of soft skills. So they also examined the ways in which soft skills shape long-term performance. They not only conducted research. What I mean to say, उनका research सिर्फ इस पे नहीं था कि which skill set is more important, whether hard skill or soft skill, but उनका research ने इस चीज को भी examine किया कि किस तरीके से long-term performance पे, है ना, असर पड़ता है, influence करता है आपका skill set, whether it is hard skill or it is soft skill. All right, and how does it impact the growth in the particular industry? एक बार maybe because of certain surge in the demand for a specific technical knowledge, you may get a job. But in future, what are the possibility? What is the likelihood of you succeeding? In that career growth, the way you are expecting now at present time to grow. So they try to understand all such things also, and the research revealed that the individual who possess a broad, robust set of these skills, soft skills such as reading comprehension, basic math and communication skills, are more likely to acquire new skills faster and develop more intricate abilities over time. Research ने ये भी बताया कि employees जिनके पास soft range of skills थे, they were more able to adjust to industry disruptions, because job market is very volatile. There are changes all the time. All right, तो उसमें disruptions भी होते रहते हैं, और अगर disruptions होते रहते हैं, if you are very, say for example, you are very passionate about a particular skill that you have, that is a technical skill, and you are very passionate about it. You never came out of that skill. आपका passion इतना बड़ा था, जुनून था, that you just focused on that only. But will you be able to adapt to the changing environment which is there in the job market? And if the adaptability, the skill is not there, perhaps you may not succeed in long run, right? They also, found that whatever kind of specialized skills that you have, they may rapidly emerge and it may dissipate. If I remember my time, जब मैं पढ़ रही थी, उस वक्त देखती थी कि जो students अगर उन्होंने थोड़ा सा भी computer science उनका ज्ञान होगा, उनकी knowledge होगी, तो एक time था जब C++ language सिखाया जाता था. I'm talking about way back in 2000. कि वो C++ सीख रहे हैं, Java सीख रहे हैं, Oracle सीख रहे हैं. आज की डेट में if you see, कहाँ चले गए वो सब? We have advanced so much. इतना कुछ एडवांसमेंट है और इतनी फास्ट आता है एडवांसमेंट कि आप एक स्किल सेट लेके एक टेक्निकल स्किल सेट लेकर के अगर मार्केट में जाते हैं, जिस स्पेस के साथ वो इमर्ज हुआ, रैपिडली इमर्ज हुआ, उसी पेस के साथ वो डिसिपेट भी हो जाता है, राइट? सो this findings of the study indicated that individuals who survive each disruption wave possesses a consistent set of competencies, and those competencies were robust problem solving abilities, effective communication styles, and the ability to work well with the teams. Again, I am mentioning team. मैंने कहा ना कि आप कितना भी आपके अंदर स्किल सेट हो, कितने भी आप ज्ञाता हो, पर आपको जो काम करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, you are not the only person. Even if you are the entrepreneur, even if you are the owner of your business, you are not working alone in that organization. You have to work with a set of people. आपको एक ग्रुप के साथ काम करना होता है, एक टीम के साथ काम करना होता है. So if you're not able to communicate well with that group, if you're not able to work efficiently in the group or the team with the team, you may not be able to survive, for longer duration in the job, right? इसी तरीके से और भी स्टडीज जो हैं, उसने ये भी हार्वर्ड की स्टडी ने डिस्कवर किया that one set of soft skills in particular aided workers in reaching the highest levels of professional achievement, and that was social skills. अभी हम लोग आएंगे कि ये social skills या soft skills कैसे they are capturing the entire job market.
डेविड जेमिंग्स, इनकी एक लैंडमार्क स्टडी थी जो उन्होंने यूएस जॉब्स पे की थी, दैट शोड दैट पोजीशंस रिक्वायरिंग अ हाई लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन ग्रू by almost 12 percentage point between 1980 to 2012. While math intensive here means technical skill, no, but low interaction roles shrank. तो अगर आप जॉब मार्केट की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि very actually the honorable vice chancellor madam, she has at the outset she said that AI is actually taking a lot of importance in today's world. बहुत तेजी से रैपिडली ये आ भी रहा है, और ये एक चर्चा भी होती है कि बहुत सारी जॉब जो है वो ऑटोमेट हो गई हैं. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर स्किल के लिए अ ह्यूमन मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट वो स्किल कैन बी ऑटोमेटेड. बट ग्रुप इंटरैक्शन, मैंने कहा ना कि एक ओनली, जब व्हेन यू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन there is not only one source which is there are various sources, और उन सारे and other thing, when we talk in terms of business, we say if you categorize all the resources in the organization, you can categorize into two parts: human and non-human resources. Okay, non-human resources may be machine, may be money, technical know-how, anything, किसी भी चीज की आप बात कर सकते हैं, वो non-human resources हैं. Human resources we all know. देखो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है. जो non-human resources हैं, they can only work with the help of human resources. AI क्या है? Non-human resources. So it will work. Yes, it has productivity, but it cannot work in isolation. You need human resources even to get work done through these non-human resources. तो अगर आप देखेंगे कि जो जॉब मार्केट में, ऐसा नहीं कि जॉब गायब हो गई है, the only thing is nature of job is changed. जो बहुत हाई टेक्निकल स्किल्स वाले जॉब हैं वो ट्रेन भले ही हुए हैं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन वाले जो जॉब्स अगर आप देखेंगे तो मार्केट में दे आर ग्रोइंग रैपिडली. उसी तरीके से आप देखेंगे जो वेज पैटर्न है, ठीक है, वो भी उसी तरीके से फॉलो कर रहा है. किसी के पास अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हु आर डूइंग देयर इंजीनियरिंग फ्रॉम टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स, they are also pursuing their master's degree in management from again high institutions, reputed institutions. IIM से IIT से आपने इंजीनियरिंग करने के बाद भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है वो IIM में जाकर के मैनेजमेंट करता है, MBA करता है. क्यों करता है? टेक्निकल स्किल्स तो उसके पास है. एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसके पास टेक्निकल स्किल उसके इंजीनियरिंग है, बट इन ऑर्डर टू survive, in order to have growth in the job market, you need to have managerial skills as well. और managerial skills क्या हैं? They are abstract in nature, they are intangible. आपकी degrees may be tangible, but the skill is intangible. So we can see that the soft skills जो set है इनका, it is so important that we cannot deny that we need to learn it. Rather we would say that we should focus on learning those soft skills. और इस तरीके की रिसर्चेस जो आई उनका इम्प्लीकेशन देखे इंडस्ट्री पे क्या हुआ, दैट वेरियस इंडस्ट्रीज दे आर टेकिंग इनिशिएटिव इन डेवलपिंग द कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देयर एम्प्लॉइज. इमेजिन वो खुद जिन एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कस्टमाइज करके ऑफर कर रहे हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ यू गो इन द मार्केट विद दोस पर्टिकुलर स्किल सेट्स, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट एन एज ओवर द अदर्स, इजंट इट? अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो अमेज़न ने एक अपस्किलिंग 2025 इनिशिएटिव शुरू किया, एंड दे इन्वेस्टेड ओवर $1 billion टू हेल्प hundreds of thousands of employees build new capabilities from technical training to programs that strengthen language skills, highlighting how soft skills are as critical to advancement as technical know-how. In the same fashion, if you see Google, उन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट ऑक्सीजन स्टडी शुरू किया, और बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करने के बाद उनकी जो स्टडी आई उसने सजेस्ट किया दैट देयर the best managers who were there with the Google, they excelled at coaching, communication and collaboration across teams. तो इस तरीके की अब तो सारी इंडस्ट्रीज भी ऐसे रिसर्चेस करके और उसके इंपॉर्टेंस को समझने लगी है. और इसी पैटर्न पे अगर आप देखें तो फिर गूगल ने भी अपने लिए they started giving preference to the people who have those set of soft skills while recruiting them for various positions.
उसी तरीके से अगर हम एक इन्फोसिस की केस स्टडी पढ़े तो उन्होंने भी इस नीड की नेसेसिटी को समझते हुए, और नीड क्या थी, टू एनहांस द एडेप्टेबिलिटी बिकॉज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. और so much so that now when we discuss about world, the happenings of the world, and when we try to compare it, what we do, we call it pre-corona era, post-corona era. So I would say after corona, इतनी ज्यादा तेजी से अपहीवल्स आए हैं, इतनी ज्यादा तेजी से चेंजेस आए हैं मार्केट में, इंक्लूडिंग जॉब मार्केट में, that adaptability has become one of the core skill set. कि किसी एनवायरनमेंट में कब कोई ऐसा चेंज आ जाए और यू मे हैव टू चेंज योर थॉट, यू मे हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, योर वर्किंग स्टाइल इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल. सो उन्होंने भी इस नीड को समझा कि इस नीड को, अडेप्टेबिलिटी के स्किल सेट को, कोलैबोरेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, एंड क्लाइंट एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की क्लाइंट के साथ आप कैसे एंगेज करते हैं. ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिलीव मी, इट इज नॉट इन वट एवर जॉब यू आर, वो आप कोई प्रोफेसर है, देन ऑल्सो यू हैव टू हैव दिस स्किल. अगर आप एक हिस्टोरियन हैं, अगर आप एक पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाले हैं, कहीं भी, किसी भी, वट एवर योर नेचर ऑफ जॉब इज, द इम्पोर्टेंट स्किल सेट दैट यू हैव, सी यू हैव टेक्निकल कैपेबिलिटी. उस किसी भी पर्टिकुलर जॉब की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी की ही है. दैट मीन्स यू हैव दैट स्किल सेट. वो टेक्निकल स्किल आपके पास है, वो हार्ड स्किल आपके पास है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पब्लिशिंग हाउस में मान लीजिए एक एडिटर की जरूरत होती है, और एडिटर का एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि वो किसी लैंग्वेज में, अगर वो हिंदी की मैगजीन है तो हिंदी में, मतलब हिंदी का पब्लिशिंग हाउस है तो हिंदी में, इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में, और मे बी बोथ, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, से फॉर एग्जांपल पीएचडी उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, दैट यू मीट, फाइन, वो तो है ही है. बट एट द सेम टाइम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव दोस सॉफ्ट स्किल सेट possessed by you, so that you get advantage, you get an edge over the others. We were talking about Infosys, और Infosys ने जब इस नीड को समझा, इसकी नेसेसिटी को समझा, so they also tried to conduct several kind of researches within their organizations, and it was discovered that numerous employees encountered difficulties in collaborating in diverse teams. They were finding difficult in making effectively, in making their presentation of ideas effectively. And they were also finding it difficult to engage with customers despite their technical proficiency. और इस सर्वे के बाद, इस एनालिसिस के बाद ही इन्फोसिस ने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसको स्माइल नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट स्किल्स मास्टरी फॉर इन्फोसिस एम्प्लॉयज. सो स्माइल जो प्रोग्राम है, क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या था? टू ब्रिज द गैप बिटवीन टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड वर्कप्लेस एफिकेसी. क्या एम था उसका? इमोशनल इंटेलिजेंस को होन करना, क्लाइंट सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्किल्स को होन करना अपने एम्प्लॉयज का, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी का उनको एक आइडिया देना, एंड क्रॉस टीम कोलैबोरेशंस कराना कि कैसे वो क्रॉस टीम, यानी कि जब व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर वेरियस टीम्स and the job of those teams may be different, but they are interrelated. We say that organization is a system, and when we talk of a system, it means they have to have several components which are interlinked and interrelated. तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अगर एक सिस्टम है और उस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटरलिंक्ड और इंटररिलेटेड है, दैट मींस सारी जो टीम्स हैं वो अलग अलग आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. एक का परफॉर्मेंस दूसरे की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा. तो अगर हमारे क्रॉस टीम कोलैबोरेशंस अगर प्रॉपर होंगे, अगर वो हमारा उसमें कोहेजन है, दैट मींस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो. आर यू विद मी नाउ? इज इट नॉट करेक्ट? राइट? और उसमें बाद में ये पाया गया, बिकॉज व्हेनेवर सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर बीइंग लॉन्च्ड, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको लॉन्च करने के बाद उसका एफिशिएंसी चेक करने का, ठीक है, वेदर द प्रोग्राम, आपने किसी एक नीड एनालिसिस की, नीड एनालिसिस के बेसिस पे यू हैव ऑफर्ड सर्टेन प्रोग्राम और यू हैव मे बी प्रिपेयर्ड अ प्रोग्राम. वो प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, वेदर इट इज फेचिंग द सेम रिजल्ट व्हाट यू एक्सपेक्टेड और नॉट, यू डू इवैल्यूएशन स्टडी. तो वैसे ही इवैल्यूएशन स्टडी इन्फोसिस ने भी की, और उस स्टडी में पाया गया, इट वाज फाउंड कि जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज enhanced, उनका क्लाइंट सेटिस्फैक्शन एनहांस हुआ था,
उनकी टीम डायनामिक्स इंप्रूव की थी, और जो रेजिलियंस टू चेंज है ना, वो लोगों में कम हुआ था। मैंने कहा ना कि अगर आपका जो जिस सुप्रा सिस्टम में, एन ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम वर्क्स इन अ सुप्रा सिस्टम, तो जो एनवायरनमेंट है वो सुप्रा सिस्टम है। अगेन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट वर्किंग इन वैक्यूम, वो किसी सुप्रा सिस्टम में काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई भी सिस्टम अगर किसी भी दूसरे सिस्टम के साथ काम कर रहा है, मतलब you are getting affected by the changes in the environment, and environment is also getting affected by the way you are working. तो अगर जरूरत पड़ी तो चेंज करना पड़ेगा। whatever equilibrium that you have set for an organization, या ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी equilibrium सेट किया है, उस equilibrium को हटाना होगा और एक नया equilibrium बनाना होगा। तो अगर रेजिलियंस हो गया, अगर लोग रेजिस्ट करेंगे ज्यादा उस चेंज को, अगर आपकी जो कंपनी के लोग हैं, एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स, अगेन विच आर दी ओनली एक्टिव रिसोर्स, रेस्ट आर पैसिव, तो जो आपका ओनली एक्टिव रिसोर्स ह्यूमन है, अगर उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, सो यू मे नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट चेंज। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दैट चेंज यू नीड टू हैव पीपल हु आर फ्लेक्सिबल, और मैंने कहा ना कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, दे मे बी इनेट, और if they are not innate, they may be inculcated over a period of time. So everybody is understanding now the importance of soft skills, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या आया उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। if you want to discuss, maybe we can discuss later on. I've discussed कि क्या क्या उसका इम्पैक्ट, उन्होंने जो इवैल्यूएशन किया, जो एनालिसिस किया अपने प्रोग्राम का, उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया, राइट। आपने बहुत बार सुना होगा कि कहते ही हैं लोग, when you talk with people, they say that hard skills may get you an interview, but soft skills get you a job, or hard skills may get you a job, but soft skills get you promoted. If you have this set of soft skill that we are talking about, you are more likely to achieve success in your organization vis-a-vis the others who do not have those soft skill sets in them, right? So if we understand the importance of, I hope we are very clear that the soft skills are important, right? इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो जॉब है ना, जिसे मैंने कहा अगेन to substantiate with the set of reports and surveys that are available, if you see the recruitment practices, they have also changed significantly. Now the companies, they are giving priority to the candidates who have those set of skills along with the technical skills. Technical skills तो है, लेकिन जिस भी बच्चे के पास soft skills भी हैं, उनको edges मिल रहे हैं, right? LinkedIn की स्टडी ने भी शो किया है that 92% of talent professionals, LinkedIn का क्यों आप एग्जांपल लिया है, because सोशल प्लेटफॉर्म में LinkedIn एक ऐसा प्रोग्राम है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिसका पर्पस ये है, आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क करते हैं, so that you can get jobs, और आप फर्दर अपने एनहांसमेंट के लिए वहां पे जाते हैं। तो LinkedIn is known platform for your professional interactions. तो LinkedIn की स्टडी में भी पाया गया कि 92% of talent professionals believe that soft skills are equally or more important than hard skills. और एक 2020 में सर्वे भी किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया ये सर्वे, and they found out that 50% of employees will need reskilling in the coming period of time, right? और वो reskilling क्या होगी? Critical thinking, problem solving, emotional intelligence, and this list of soft skill is endless. लेकिन हम कुछ top few lists की या top few soft skills की बात कर सकते हैं to begin with, right? Again, before discussing what is soft skill, let us see how the companies, आप कहते हैं ना कि भाई जो hard skills हैं वो तो technical हैं, ठीक है, सॉरी जो हाँ टेक्निकल है, और अगर टेक्निकल है तो इट कैन बी शोन, आपके पास कोई डिग्री होगी, आपके पास कोई एक्सपर्टाइज होगा, तो वो टेंजिबल हैं, उनको तो हम देख सकते हैं। पर जो सॉफ्ट स्किल है वो इनटेंजिबल है, और अगर वो इनटेंजिबल है तो फिर आप उसको कैसे असेस करोगे, या आप कैसे जानोगे कि हाँ वो है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज हैं, दे आर अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स टू इवेलुएट बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स के लिए मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टैंजिबल थिंग्स टू शो, बट सॉफ्ट स्किल को भी मेजर करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस ये कंपनीज यूज कर रही हैं, जैसे कि दे आर कंडक्टिंग बिहेवियरल इंटरव्यूज नाउअडेज, कि वो बात कुछ भी करेंगे, इन जनरल बात करेंगे,
आपका स्किल सेट आपकी डिग्री से और 2000 क्वेश्चन से उन्होंने जान लिया, बट दे विल टॉक ऑफ द इंटायर वर्ल्ड टू यू एंड यू मे नॉट इवन अंडरस्टैंड, और आपको शायद ये समझ में भी नहीं आएगा दैट दे आर ट्राइंग टू एनालाइज यू थ्रू द इंटरेक्शन, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। आप किसी, दे वुड ट्राई टू गिव यू सर्टेन क्यूज। आप देखोगे अगर जाओगे जब भी आप किसी इंटरव्यू पैनल को फेस करने के लिए, तो देयर इज अ पैनल एंड देयर आर सेट ऑफ पीपल्स। उसमें कुछ कोई साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, कुछ उसमें बहुत सॉफ्ट अप्रोच रखने वाले होते हैं, और कुछ बहुत हार्ड अप्रोच रखने वाले होते हैं। इट इज ऑल डेलिबरेट। आप बीच में कोई जवाब दे रहे हैं, पीछे से तुरंत कोई किसी ने उसको बोला कि एक स्ट्रोक दिया उन्होंने, एक स्टिमुलेट दिया, अरे छोड़ो इसमें ये तो बेकार है, ये बताओ, नाउ यू टेल मी मिस्टर सो एंड सो व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। You may think that they are trying to know about their knowledge. No, they are trying to test that in different circumstances, how you are reacting. How are you trying to manage the entire group of people? वो आपके ये सारे gestures भी देखने की कोशिश करते हैं, तो उसके behavioral interviews conduct किए जा रहे हैं. You may also experience that situational judgment tests are being given nowadays. When you appear for an interview, you may be given a situation. कि आपको एक situation narrate कर दी जाएगी, जैसे मैंने एक hypothetical एक कहानी बना दी आपके लिए, वैसे ही hypothetical situation narrate की जाएगी. And you will be asked to react. कि अगर आप इस situation में होंगे तो how will you work? उसके साथ साथ there are certain psychometric assessments also to gauge attributes. कैसे attributes such as emotional intelligence, teamwork, leadership potential के लिए बहुत सारे psychometric assessment भी आ गए हैं, जिसमें से एक TAT है, thematic perception test, which are being used. और जैसे मैंने कहा कि AI कोई भी फील्ड नहीं छोड़ता है, AI is entering everywhere. So even to assess the soft skill, you know, there are companies with the help of AI. वो अब तो वो कंपनीज ही अलग फॉर्म हो गई हैं जो आपको ये सर्विसेज देती है, अदर कंपनीज को ये सर्विसेज देती हैं, that if they want to assess the soft skills of the recruitments that they are going to do, तो वो उनको अपना एक सेट ऑफ टेस्ट और ये सब प्रोवाइड करते हैं. उसमें जैसे असेस फर्स्ट करके कंपनी है, या लिवरेज एआई करके कंपनी है, जो कि कैंडिडेट की बिहेवियरल ट्रेट्स को एनालाइज करती है और उनका कल्चरल फिट बताती है, या उनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बताती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल के एनवायरनमेंट में, वर्किंग कंडीशंस में, और नेचर ऑफ डिमांड जो आपकी जॉब की है, उसमें वो जो कैंडिडेट जिसको आप हायर कर रहे हैं वो कितना सूटेबल है और कितना सूटेबल नहीं है. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू सॉफ्ट स्किल. हमने देख लिया कि भाई सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सॉफ्ट स्किल्स को इसीलिए कहते हैं कि दे आर पीपल स्किल्स. पीपल स्किल्स व्हाई? बिकॉज दे आर डिनोटिंग योर एट्रीब्यूट्स. वो आपके एट्रीब्यूट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. और इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स को हम कहते हैं इंटैंजिबल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट सॉफ्ट स्किल्स आर द इंटैंजिबल एबिलिटी. ठीक है. Abhi, just again considering in mind that students may also listen to this, एक उनको क्विकली डिफरेंशिएशन देने के लिए हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में, अगर हम हार्ड स्किल्स को कुछ एग्जांपल से देखें तो हम लोग कहेंगे कि अगर इफ यू वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, योर हार्ड स्किल इज योर एबिलिटी टू प्रोग्राम. अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, देन यू शुड हैव एबिलिटी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड यू शुड नो हाउ टू मेक कैलकुलेट द टैक्सेस of your company as well as the clients of the company. और अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. या पैरालीगल कुछ ऐसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए. ओके. हिस्ट्री कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है, एक स्टूडेंट ने, वो प्रोफेसर बने, आर्किविस्ट बने, जर्नलिस्ट बने, हिस्टोरियन बने, म्यूजियम क्यूरेटर बने, आर्कियोलॉजिस्ट बने, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं. ठीक है. अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, तो ये मतलब व्हाटएवर जॉब दैट यू आर गेटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर हार्ड स्किल्स. ठीक है. लिटरेचर ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो वो मीडिया में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, एकेडमिक्स, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिविटी एंड द कमांड ओवर द लैंग्वेज. पब्लिक रिलेशंस अगर आप देखिए तो आजकल हर ऑफिस में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं. यू मे बी बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट, और मे यू मे ऑप्ट फॉर कंटेंट राइटिंग और बीपीओ और पब्लिशिंग. ट्रांसलेशन स्टडीज में अगर है, जैसे कि मैडम वाइस चांसलर ने बताया कि आपके पास ये भी एक डिपार्टमेंट है ट्रांसलेशन स्टडीज का, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जिसमें कि आप बिकॉज ऑफ योर हार्ड स्किल दैट वुड बी द एसेंशियल क्राइटेरिया टू गेट एब्जॉर्ब इन दैट पर्टिकुलर जॉब. बट हमने कहा ना कि जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि
लॉ के फॉर्म में अगर आपको जाके काम करना है तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो एक स्पेसिफिक स्किल आपके पास किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, बट व्हेन वी टॉक ऑफ सॉफ्ट स्किल दे आर मोर जनरल एंड दे कट अक्रॉस मोस्ट टाइप्स ऑफ जॉब्स। किसी भी तरीके की जॉब में अगर आप जाओ, बहुत कुछ बारिंग 2-3 छोड़ दीजिए अगर आप, ठीक है, अब कोई वही बना रहा है, रॉकेट ही बना रहा है, तो उसको अगर आप थोड़ा कुछ बहुत हाईली स्पेशलाइज स्किल को अगर छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी जगह पर ये जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना फॉर्म में होने चाहिए, and they are essentially essential that you have that so that you can work well with others in the company. You have to work with the teams, right? अब वो जो सॉफ्ट स्किल्स की मैं बात करी, उन्होंने कहा ना कि the list may be endless, the list may be exhaustive, long, but to begin with maybe you need to have empathy, communication skills, interpersonal skills, work ethic and self motivation, teamwork, creativity and problem solving, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप रोल्स। तो ये सारे कुछ स्किल सेट हैं विच आर बाय एंड लार्ज रिक्वायर्ड बाय ऑल द कंपनीज। क्विकली, क्योंकि एक एक पे फॉर ईच स्किल वी मे हैव अ डिफरेंट सेशन, पर क्विकली मैं बताते हुए आपको आज के टाइम में कौन से मॉडल्स बने हैं, कौन से फ्रेमवर्क्स बने हैं सॉफ्ट स्किल के लिए। आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड मे बी इन अनदर डिस्कशंस और डिस्कोर्सेस वी कैन हैव full deliberation on that. Empathy as the word suggests, सब जानते हैं empathy मतलब क्या होता है। तो अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हुए और फिर ऑर्गेनाइज, से फॉर एग्जांपल आपको एक फाइल मूव करनी है अपनी टेबल से दूसरी टेबल पे, देयर कैन बी 2 अप्रोचेस। क्या आपने अपना कुछ भी किया और बस आपने दूसरे के सर पे उसको दे दिया, यू जस्ट फॉरवर्डेड इट विदाउट कंसिडरिंग कि व्हाट डिफिकल्टी ही और शी मे फेस जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट गिवन ड्यू डिलिजेंस from their perspective in your file. So empathy, unless you understand how others feel, या किन चीजों से सामने वालों को परेशानी होगी, मैं आपको जस्ट एक इन जनरल वो दे रही हूँ, इनसाइट दे रही हूँ। मैंने कहा ना, अगेन वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सो एम्पैथी, ये स्किल भी होना जरूरी है। अगर ये स्किल होता है तो ये क्या काम आता है कि जो भी काम आप करोगे अगले के लिए भी वो आगे फॉरवर्ड करना ईजी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि हर काम आप ही बिगिन करोगे, आप ही शुरू करोगे। एज एन एम्प्लॉय यू मे गेट ऑल्सो फाइल फ्रॉम द अदर पर्सन, किसी और मतलब आपके पास भी पहले से कहीं से फाइल आ रही होगी। अगर वो भी एम्पैथेटिक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू वर्क, एंड इफ यू आर एम्पैथेटिक इट इज पासिंग ऑन टू द अदर जहां पे वो जा रहा है, ठीक है। लाइकवाइज कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इज बिलीव मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डिसाइड करता है हाउ well you can work with the other members in the team or with the other groups, with the other teams. So आपका जो communication है, whether it is verbal, it is non-verbal, it is written, whatever kind of communication that you have, that's very important, not only for relations, not only for networking, but also for, say, अगर हम किसी management के level को देखें, from that perspective you see, we can say there are 3 levels, top level, middle level and bottom level. टॉप लेवल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं, गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, एंड देन इट इज सेंड डाउनवर्ड आता है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने डिसाइड किया, उनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, ठीक है, वो वापस आया मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, दिस इज व्हाट यू नीड टू इम्प्लीमेंट, गेट इम्प्लीमेंटेड, और फिर वो नीचे जाता है बॉटम मैनेजमेंट के पास टू फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर इवन सी the communication from top to middle to bottom, even that is important. If you can clearly communicate what the objectives are, if the top level management fails to communicate clearly what are the objectives, it may affect, or it will affect it, it will certainly affect the implementation of that particular objective. With me? Likewise, interpersonal skills, हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हैं। If you say, for example, if you think that you are the only, able person in the organization, तो आपका जो behavior होगा लोगों के प्रति दूसरा होगा। And if you feel that yes, I have my own capabilities, but others also in this organization, they also have their own capabilities. तो मेरी कुछ अपनी strengths and weaknesses हैं, तो अगले की भी strengths और weaknesses हैं, उनकी strengths भी हैं। Not that you have strengths only and others have weaknesses only. So interpersonal skills इस बात पे भी depend करता है how you are trying to pose yourself in the organization towards others. लोगों के साथ आप कैसा अपना बर्ताव रखते हैं, कैसे रखते हैं,
Then work ethic and self motivation, कि वर्क एथिक को वेदर यू आर फॉलोइंग दी वर्क एथिक और नॉट। मैं एक बहुत एक कॉमन सी बात कहूंगी, हो सकता है कि किसी को ना भी पसंद आए, बट इन जनरल जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे कि फॉर मी सबसे पहले फैमिली, फिर जॉब और फिर बाकी सारी चीजें। कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए सबसे पहले जॉब, फिर फैमिली, फिर बाकी सारी चीजें। You may wonder what is correct, क्या सही है क्या गलत है, right? Now, work ethics will give you a clear insight as to what should be the right course of action and what shall be the allocation of time. आप किस चीज को कितना टाइम देते हैं, ये वर्क एथिक इसकी क्लैरिटी आपको दे देगा if you are conscious about the work ethic. ठीक है, अगेन वी कैन एक एग्जाम्पल से, एक मॉडल से इसको हम इकट्ठे समझने की कोशिश करेंगे। देन टीम वर्क इज देयर, ऑब्वियसली इफ यू आर एबल टू वर्क वेल इन अ टीम, और किसी टीम में अच्छे से काम करने के लिए, जैसे मैंने कहा, सबसे ज्यादा जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। You may also have your own strengths and weaknesses. Likewise, others also they have their own strengths and weaknesses. तो दूसरे की वीकनेस अगर आप में स्ट्रेंथ है, गिव सपोर्ट टू देम। और अगर इसी को हम कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट। मैनेजमेंट में हम कहते हैं, अगर आप प्योर साइंसेज में जाएंगे तो 2 + 2 = 4, मैथमेटिक्स में जाएंगे तो मैनेजमेंट कहता है 2 + 2 मे बी 4 और मे बी लेस देन 4, मे बी हायर देन 4। क्योंकि अगर सिनर्जी होगी, अगर टीम वर्क इफेक्टिव होगा, तो एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ को ओवरकम कर लेगी, सॉरी एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस को ओवरकम कर लेगी, एंड द ओवरऑल रिजल्ट वुड बी, अगर टीम में आप काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा। उसी तरह अगर सिनर्जी का ऑपोजिट होता है ग्रुप लोफिंग। अगर लोफिंग है, सब लोग देखते हैं कि अरे वो तो काम नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगा, व्हाई शुड आई गिव दिस मच ऑफ टाइम व्हाइल द अदर इज नॉट गिविंग। तो ग्रुप ज्यादा टाइम में बातचीत ही हो रही है, चाय ही ज्यादा पीने जा रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादातर टाइम हमारा उसी में निकल गया। तो जो पूरे ग्रुप को काम करना था, उसका जो होना चाहिए प्रोडक्टिविटी, उससे कम भी हो सकती है, राइट। सो टीम वर्क में कैसे काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप ही इमेजिन करो कि आपके साथ का कोई एम्प्लॉय बार बार आपको एक प्रॉब्लम लेके आता है कि ये प्रॉब्लम है जी, क्या करें, वो अप्रोच। और कोई लेके आता है कि लुक, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द हार्डशिप दैट वी आर फेसिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, but I have thought of it and maybe these are the possible solutions, but as you know, more experienced colleague, you may guide me as to what to do. तो अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, हर बात में आपको लगता है कि ये गलत है, ये खराब हो रहा है, ये तो हमारा इंस्टीट्यूशन ही बेकार हुआ चला जा रहा है, दैट इज वन अप्रोच, दैट इज प्रॉब्लम को एनहांस करने का अप्रोच है। बट इफ यू हैव दैट अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, that you also think of alternatives, alternative course of action which should be taken overall productivity को बढ़ाने के लिए, तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल बहुत काम आता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो इनहेरेंट चीजें जो होनी चाहिए आप में, दैट इज क्रिएटिविटी, हाउ यू कैन सी थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। तो क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें मैं कहती हूँ ना कि इट मे बी इनेट इन यू, एंड इफ इट इज नॉट इनेट, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, इट मे बी इनकल्केटेड ओवर period of time if you really wish for it and if you really act for it. Flexibility and adaptability, we know all. Conflict management is very important nowadays. हर ऑर्गेनाइजेशन में जब अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट होना जो है वो होना ही होना है, इट इज इम्पेरेटिव, इट विल हैपन, बट हाउ टू मैनेज दैट कॉन्फ्लिक्ट, to have an understanding, to understand that yes, there have to be conflict, लेकिन उस conflict से कैसे हमें manage करना है, उसको कैसे resolve करना है, that is also a skill set which you need to know, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे तो लगेगा कि मैनेजमेंट की किसी टेक्स्ट बुक में भी ये सारी चीजें आती पाई जाती, बट बिलीव मी, इट इज अ लाइफ स्किल, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट। एंड देन लीडरशिप स्किल्स, कि एक जॉब तो आपको मिल गई अपने स्किल सेट्स की वजह से, बट इफ यू वांट टू ग्रो फर्दर, अगर आप उसमें एडवांस करना चाहते हो उस जॉब में, और अगर आप में वो लीडरशिप स्किल्स है, इफ यू कैन एग्जिबिट दोस लीडरशिप स्किल्स, तो likelihood of your getting promotions earlier vis-a-vis others who do not have that kind of skill set increases. आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उस लैडर में ज्यादा तेजी से चढ़े vis-a-vis the others, right?
इसी को समझाने के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप था, 2 लोग मिल करके दे गेव अ मॉडल जिसको हम कहते हैं जोहारी विंडो मॉडल. दिस मॉडल इज नथिंग बट इट इज अ मॉडल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप. इससे अगर आप इस मॉडल को समझ लें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. अपना जो सेल्फ अवेयरनेस को जब आप समझते हैं तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं. और जब आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, इफ यू आर अ बेटर पर्सन, आप किसी भी ग्रुप में जाकर के जल्दी से आप एडजस्ट होते हैं और आपका जो एक गुडनेस है दैट इज रबिंग ऑन टू अदर्स ऑल्सो, वो दूसरों में भी आप, और गुडनेस भी है, लीडरशिप स्किल भी है, तो आप उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं दे विल बिकम योर फॉलोवर एंड व्हाटएवर यू डू. इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूट का जो लीडर है अगर वो बहुत अच्छा है तो ग्रुप अपने आप बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा हो जाता है. ठीक है, तो ये एक मॉडल दिया गया जिसको हम कहते हैं जोहारी विंडो मॉडल. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे 2, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम. इन्होंने डेवलप किया इसको 1955 में और इन दोनों के फर्स्ट नेम का लेकर के, जोसेफ का जो और हैरी का हैरी लेकर के इसको एक नाम दिया गया इस मॉडल को, विच इज कॉल्ड एज जोहारी विंडो. इस मॉडल में जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है टू द डिस्क्लोजर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. पहला कि हमारा अवेयरनेस क्या है, हम अपने बारे में जाने, अपने बारे में जानेंगे, फिर हम लोगों के बारे में जानेंगे, देन विल बी एबल टू इंटरैक्ट मच विद अदर्स और उनके साथ काम हमारे करना हमारे लिए इजी होगा. ठीक है, और इस मॉडल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन, मतलब इस मॉडल को समझना क्यों जरूरी है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन दिस मॉडल. हम देखेंगे अभी इसको. इसमें 4 रीजन्स उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की है. और उस 4 क्वाड्रेंट्स में उन्होंने यही देखा है कि बाय टेकिंग, एक्सेप्टिंग एंड गिविंग फीडबैक यू कैन इम्प्रूव. आप उस क्वाड्रेंट के किस हिस्से में फॉल करते हैं, अगर आप दूसरे हिस्से में जाना चाहते हैं तो जस्ट बाय टेकिंग और एक्सेप्टिंग एंड गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यू कैन डू इट. ठीक है, वो कैसे होता है, इफ यू वांट टू सी, तो वो जो 4 है क्वाड्रेंट्स, उसमें से एक क्वाड्रेंट होता है दैट, उसको हम कहते हैं ओपन एरिया, known by you and also known by others. आप अपने बारे में भी you are aware of your own strengths and weaknesses and people are also aware of your strength and weaknesses. जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जॉब टाइटल है, आप किसी कंपनी में किसी की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर है, आपका जॉब टाइटल है. आप किसी कंपनी के किससे फॉर एग्जांपल एडिटर है, वो आपका जॉब टाइटल है. तो पीपल आर अवेयर. आपको कुछ रिकॉग्निशन मिला है, कुछ अवार्ड मिला है, वो आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं. दैट इज कॉल्ड ओपन एरिया. ठीक है, दूसरा होता है एक ब्लाइंड एरिया. जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसका जोहारी विंडो मॉडल का, वो होता है ब्लाइंड एरिया. यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर ट्रेट अबाउट योरसेल्फ बट अदर्स नो. ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड एरिया. समटाइम्स इफ यू सी व्हेन यू टॉक टू समवन यू मे ऑब्जर्व सर्टेन थिंग्स, उनका मूवमेंट, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करने पर उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं अगर नर्वस होती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज है. ठीक है, तो जो ग्रुप के लोग हैं अगर उनको, दे आर अवेयर अबाउट इट बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. दिस कैन बी वन सिचुएशन. कैसे कैसे इन सारे सिचुएशंस का क्या यूज है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी. द थर्ड क्वाड्रेंट इज हिडन एरिया, known to you but known to others. You know your own weakness. आपकी कुछ एक डिफिकल्टी है, एक वीकनेस है जो आपको पता है लेकिन दूसरों को पता नहीं है. मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन पास्ट एक्सपीरियंसेस, या आपका कुछ अपना पर्सनल फियर है किसी चीज को लेकर के. ठीक है, तो वो आपको पता है कि मुझे इस चीज को लेकर फियर है, लेकिन अगले को पता नहीं कि उस चीज को लेकर फियर है. क्या होगा अगर अगले को पता नहीं हुआ तो यू मे बी गिवन अ टास्क, या आपको किसी ऐसे सिचुएशन में डाला जा सकता है जिसका फियर आपको ऑलरेडी है, तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी विल बी नेगेटिवली इंपैक्टेड. इज इट? तो दिस इज कॉल्ड हिडन एरिया, अननोन एरिया, है ना, कि जिसमें ना आपको अपने बारे में पता है ना दूसरों को आपके बारे में पता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिडन एरिया. ये अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स है या अनडिस्कवर्ड ट्रॉमास है. तो अगर आप देखेंगे कि जितना इट इज ऑलवेज बेटर टू बी इन ओपन एरिया. ओपन एरिया जैसे मान लीजिए अगर ब्लाइंड एरिया में है, कुछ चीजें ऐसी जो आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स तो पता है, अपनी वीकनेसेस पता है, नहीं पता है. ठीक है, लेकिन लोगों को पता है. तो इफ यू आर ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, अगर आप किसी की कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को लेने से बुरा नहीं मानते हैं,
तो बहुत freely, without any fear, people will come and tell you कि when you get nervous, this happens, or this particular situation makes you nervous. I think you should work upon it. ठीक है? तो ब्लाइंड एरिया को जितना जितना आप कम करते जाएंगे और ओपन एरिया को जितना जितना आप बढ़ाते जाएंगे, अगेन इट्स अ वेरी इलैबोरेटिव टॉपिक, मैं इसका सिर्फ आपको एक ग्लांस दे रही हूँ, ग्लिम्स दे रही हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप उसको जाके फर्दर, आजकल देयर इज नो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, आप पढ़ भी सकते हैं और फर्दर कुछ डिस्कस करना, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी. तो द मोर यू वाइडन योर ओपन एरिया, जितना आप उसको बढ़ाते जाते हैं उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइडन दैट पर्टिकुलर एरिया. और दूसरा एक बहुत एक टेक्निकल वो है, मॉडल है अगेन, जिसको एरिक बर्न ने दिया था, उसको मैं बहुत क्विकली बोल करके और फिर ग्रेजुअली मैं इसको खत्म करूंगी. वो ये कि उन्होंने कहा कि व्हेन वी टॉक टू, हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे, व्हेन वी टॉक टू समवन वी आर ट्रांजैक्टिंग. मैंने कुछ बोला, उसके बदले मुझे कुछ रिप्लाई मिला. तो ये जो हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम एनालाइज करें या इस ट्रांजैक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल. और उसके लिए उन्होंने बताया कि जब हम बात करते हैं तो हम 3 ईगो स्टेट्स में हो सकते हैं. एज एन इंडिविजुअल आप 3 ईगो स्टेट्स में हो सकती है. आपका इनेट है, इनर है, हमें पता नहीं चलता है. हो सकता है कि कोई 18 साल का बच्चा जो पेरेंट ईगो स्टेट से बात करे या अडल्ट ईगो स्टेट से बात करे, और हो सकता है कि कोई 70 इयर्स का जो है ना एक्सपीरियंस पर्सन भी जो है वो चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करे. सो व्हाट इज, और अगर आप समझ जाते हैं कि वो किस ईगो स्टेट से बात कर रहा है, तो आप ज्यादा ऑफेंडेड फील नहीं करते या अगला भी ऑफेंडेड फील नहीं करता है. ठीक है, तो वो ईगो स्टेट्स क्या है? एक होता है आपका पेरेंट ईगो स्टेट. उसमें क्या होता है, यू थिंक दैट व्हाट एवर आई नो इज गुड, लेकिन जो सामने वाला है, ही नीड्स टू नो समथिंग, उसको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, तो आई शुड एज पेरेंट, जैसा कि होता है, पेरेंट के भी अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं. अगर इसका डिटेल है, नर्चरिंग पेरेंट हो रहे हैं आप, या बहुत क्रिटिकल पेरेंट हो रहे हैं. कुछ क्रिटिकल पेरेंट्स होते हैं, हर वक्त कमी बताते रहते हैं. ठीक है, और तरीका होता है अलग अलग पेरेंट्स का. उसी तरीके से जो आपका ईगो स्टेट है, जो मेंटल स्टेट है, आप किस ईगो स्टेट में है और किस ईगो स्टेट में बात करें, वो डिपेंड करता है. तो इफ यू आर टॉकिंग विद पेरेंट ईगो स्टेट, देन योर अप्रोच इज आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. Whatever I say is correct, whatever you say may not be correct. सही नहीं है. ओके. दूसरे जो ईगो स्टेट है वो होता है अडल्ट ईगो स्टेट. आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके. अडल्ट मेच्योर बिहेवियर, कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मेरा एक प्रेजेंटेशन, सपोज आइडियाज का कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो एक टीम ने दिया, एक व्यक्ति ने दिया, दूसरे व्यक्ति ने दिया. सो एक ने कहा कि ठीक है, मेरा ये थॉट है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने का, बट यू आर सजेस्टिंग दैट इज आल्सो गुड. लेट अस इवैल्यूएट बोथ द थॉट्स और बोथ द आइडियाज एंड कम टू कंक्लूजन व्हिच शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और मे बी अ मिक्स ऑफ बोथ बी इम्प्लीमेंटेड. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल अगेन. तो आप अगर अडल्ट ईगो स्टेट से बात करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा या उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी और आपकी इंटायर टीम की, वो एनहांस होगी. तीसरा होता है आपका चाइल्ड ईगो स्टेट, है ना. आई एम नॉट ओके, यू आर ओके. एक चाइल्ड क्या होता है, सबमिसिव हो जाता है ना, कि जो मेरे पेरेंट्स ने कहा, जो बड़े लोग कह रहे हैं वही सही है, मुझे तो उतना पता नहीं है. तो मैंने कहा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, irrespective of your experience in the organization, when you transact with others, when you talk to others, you may be with any of these ego states. If you understand, again जौहरी मॉडल विंडो आ जाता है यहाँ पर. इसका मतलब कि आप दोनों मॉडल को कैसे जोड़ सकते हैं. If you are open to, accept constructive feedback, तो अगर सामने वाला आपको बोलता है कि यार मैं भी कुछ भी बोलता हूँ ना, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स नो से शुरू होता है, you will take it, you will accept it. ऐसे केस में क्या हो रहा है, आप पेरेंट ईगो स्टेट से अडल्ट ईगो स्टेट पे आ गए. मींस आई एम ओके, यू आर ओके. अंडरस्टैंडिंग इट. सो इवन दिस इज ट्रांजैक्शन एनालिसिस जस्ट अ टूल. अभी तो आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा है काउंसलिंग में भी और सब चीजों में, और ऑर्गेनाइजेशंस में तो यूज होता ही होता है. सो ये इस तरीके के बहुत सारे, कभी आप देखते हैं ना कि हर इंसान को एक रिकॉग्निशन की जरूरत होती है. तो how you initiate the conversation, which is called stroke. तो कैसा stroke आप दे रहे हैं दूसरे को while you are initiating the conversation becomes very important. Again, अगर आप पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, that will be accepted. लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म्स के साथ जाते हैं और तब आप एक फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है सामने वाला उस फीडबैक को अच्छे से ना ले.
So while transacting also you have to understand अपना ego state कि मैं किस ego state में हूँ, सामने वाले का ego state कि वो कुछ किस ego state में है, and then when you alter the style of communication positively, it may fetch you better results. ठीक है, तो ये कुछ important ये कह सकते हैं कि बहुत ऐसे models थे, बहुत कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा I understand ऑफलाइन सेशंस को बहुत लंबा खींचना would be a little rude for the audience also. I'll just quickly say कि अभी भी ये सारे रिसर्चेस जो भी निकल के आए that is correct, बट अगर हम अपने इंडियन इथोस को देखेंगे, हमारी प्रैक्टिसेस को देखेंगे, तो ये बहुत पहले से प्रेजेंट है, और हमने ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कि हमारी जो एपिक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें ये बातें हमें बताई गई हैं। वो चाहे वो भगवत गीता देखिए, वो भी हमें बताता है कि भाई सेल्फलेसनेस क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्यूटी क्या है, डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रामायणा को देखते हैं, उनकी स्टोरीज को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लॉयल्टी क्या है, हाउ शुड वेदर वन शुड बी लॉयल और नॉट, क्या होती है वो लॉयल्टी, परसिवियरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, रेवरेंस कि ट्रस्ट क्या है, टीम वर्क क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। इसके साथ साथ अगर आप हमारी बहुत सारी पंचतंत्र की किताबें देखेंगे, उनकी जो छोटी छोटी स्टोरीज को अगर आप पढ़िए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो उनमें देते हैं, है ना, ये बहुत पहले से इस नीड को, सॉफ्ट स्किल की नीड को परहैप्स हमारी कंट्री ने उसको समझा, हमारे कल्चर ने उसको समझा, एंड वी हैव ट्राइड टू इनकलकेट इट इन द यंग माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों ने उसको बताने की कोशिश की है। एंड इफ वी आर सक्सेसफुल in understanding this and implementing some of the best practices, perhaps no one can stop us from growing in an organization and getting personal satisfaction in personal life also. With this, I end my discussion here. The floor is now open for questions, if there are any. Thank you very, very much, madam, for such an insightful and illuminating session. I am definitely sure that our students will be benefited and enriched with your such an insightful and in-depth study, which means links Western knowledge as well as our Indian tradition. Now, madam, I would like to invite our VC madam for her kind opinion at this point of. Yeah, constructive feedback. Yeah, yes, ma'am. Good. Yes. Please, VC madam. Honorable Vice Chancellor madam. Sure, I will start. Yes, Okay, thank you please. so much, Professor Anupriya. After you have spoken, I don't have too many points to add to that, because you are the expert and you have spoken on everything, starting with soft skills to varieties of skill enhancements and various academic programs across the disciplines and universities. Even you touched upon Indian knowledge systems. You talked about so many things. So I don't have comments for you. Just what was my takeaway after listening to you? I was jotting down some points which we can use for our future research in our upcoming programs in the training, placement, and students welfare cell. I'm sure that the students are hugely benefited by your lecture. Everyone who is taking down points, probably they have a lot of questions for you. I have just one question, but before I go to that question to the expert, what I took down today, I would just mention a couple of things. You said that organizational behavior demands creativity. That is one point that you emphasized. Then skill enhancement trains the individuals while institutions may resist. Sometimes you see some institutions which may resist skill enhancement. They may be very, very traditional. They may not like to go for new ideas, new techniques, new propositions, new academic programs. They may be very traditional. For example, literature departments, language and literature departments sometimes can be so traditional that when you talk about digital humanities, post-truth kind of programs in literature departments, there may be some resistance. In such a scenario, how can you handle? That is one point which Professor Anupriya took out. Probably we can discuss a little more about that. Traditional approach and contemporary approach. Is it some kind of a binary?
That is one question. Then Professor Anupriya emphasized on the importance of soft skills and why they are called soft. What is the softness about soft skills? She narrated that. And then the employment market, it rewards flexibility, but it withholds security. So many varieties of jobs are coming up. When we were young, we had very traditional things like our parents used to tell us, you be a professor, or you be a doctor, or you be an engineer. Beyond a professor, doctor, and an engineer, there was nothing else. If somebody was not really very good and they did not become a professor, then they used to push them towards B.Ed and be a teacher. That was a very traditional approach of the previous generation. But our generation is very, very flexible. We are allowing our children, allow is not the right word. Who are we to allow or disallow anybody? We are facilitating our next generation for skill enhancement and very flexible and very contemporary kind of courses and programs, and AI is aptly helping them. But the other side of the coin is employment market rewards flexibility, but it withholds security. Is there security? If your child is a painter and he wants to take up painting through AI as his profession, will you feel very secure? Will you feel very comfortable? Those kind of pertinent and complex questions which training and placement cell has to handle will definitely come up, and Professor Anupriya Pandey is the right person to address those questions. So, Madam, I have just one question for you. You may choose to take this question. You may even reject this question. No, please, But, no. but my question is, how can we train our next generation to handle rejection? Rejection, yes. Rejection It is can come. challenging. It is challenging, ma'am. I agree with you completely. And the way the next generation, they are changing, and the exposure that they have, yes, it is difficult. That is why I say resistance to change is there. It is always there. Whether you talk of this generation or older generations, resistance of change is something which will be there. The only answer to that is we need to give time to, address the equilibrium which is already there. Ek system set ho gaya, so there is an equilibrium. So we have to dismantle that equilibrium first. Usko pehle humko unfreeze karna hai. Then we have to set up a new equilibrium. And when we are setting a new equilibrium, we have to give time again to freeze it. So what is most important is unfreezing the equilibrium which is already set. So अगर जैसे मैं आपने कहा, if I take clue from that, कि बच्चा आपको ऐसा लगता है कि there is no security in a particular job, for instance, right? बच्चे की बात जब मैं बात करूँ, that means students. हमारे लिए तो students भी हमारे बच्चे हैं. So as a parent or as a teacher, if we feel कि पता नहीं इसमें job security है कि नहीं है, and if the child is showing some kind of passion in that particular area, the only answer to that is creativity. See, whatever skill a child has, अगर skill के साथ साथ उसके अंदर एक creativity भी है, तो वो उसको एक different angle दे पाएगा. For instance, मधुबनी painting या आप जो भी traditional काथा वर्क की जो painting होती है, अगर आप वो देखेंगे, what do you call it, कास्तकारी जो भी होती है, आपका लखनऊ का chicken work जो अगर होता है, तो बीच में ऐसा टाइम आया था ना, वो ओल्ड फैशन माना जाने लग गया था. बट डू यू वुड अग्री विद मी दैट ये सारी चीजें दे आर नाउ अ प्रीमियम थिंग, एंड यू हैव टू पे अ प्रीमियम प्राइस टू गेट दैट ऑथेंटिक वर्क. कैसे आया ये, कैसे हो रहा है ये, हाउ इज इट हैपनिंग? So we need to know the skill that we have, and we also need to understand or have the skill of marketing it, projecting it to the others. तो अगर हम उसको project कर पाएंगे. Professor Anupriya, my basic question was, how do we teach our next generation to handle rejection when they're rejected? They're not able to handle. See, we have to give a perspective to the kids. We have to take time. जब वो अगर किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं, तो इसमें रिवर्स साइकोलॉजी बहुत काम आती है. If you see, this is a buzzword, reverse psychology. You also start rejecting the ideas, and while rejecting, you can put in some positive points towards it, and you have to then let it thaw. You have to give time to it. So ये जो reverse psychology है, at times, मतलब देखिए, there is no hard and fast rule. ये तो human behavior को handle करना is not a science. It is an art. You would agree with me.
So Yes. there are certain techniques that you can use. Reverse psychologist, it may be one. There may be others also which psychologist would be knowing more. But जो ज़्यादा काम में आ रहा है, जो which we are using with our kids or the kids that are around us, वो reverse psychology. आप उन्हीं की टोन में पहले बात करना शुरू करिए. You also start rejecting it, while in between throwing some positive points, and you have to do it repeatedly. तो patience अभी हमारे में होना जरूरी है, बच्चे में हो या ना हो. Student पे होना. This is my. Sure. So wonderfully put it. Dr. Indrajit is waiting with some questions. I can see that. Yeah, please. Yes, madam. Thank you, madam. Now I will request and invite my students as well as the participants. If they have any queries, they can feel free to ask their questions to Professor Anupriya, madam. Good morning, madam. Good morning. I'm Kajuri. I'm an employee of Hindi University. I have a question. It's like a question I faced in interview. I think it's relevant nowadays also. That sometime I ask that what I analyze myself in a SWOT analysis. SWOT analysis, yes. SWOT analysis. How to approach that? What is the acceptable answer for that? Can you please guide me on that? Yeah. As you have very rightly pointed out, SWOT analysis. So the word SWOT indicates S for strength, W for weaknesses, O for opportunities, and T for threats, right? So strengths and weaknesses are your very own. But opportunities and threats, they are posed by the environment. This is not beyond your control. This is not under your control. So what is under your control is the strengths and weaknesses. So as an individual, whether it is a job interview or it is an environment where you're working, if we are very vigilant about the environment which is there, we need to just understand whether the idea that we are floating, या जो जवाब मैं दे रही हूँ, whether it is suiting to that particular environment or not, या उस environment की क्या demand है. So we need to understand opportunity or threat. तो एक आपने उसको एक term दे दिया, but to understand it better, you have to analyze the whole situation and you have to analyze the demand of that particular time. उस time पे उसकी क्या demand है. जैसे अगर आपको एक situation देके अगर मुझसे बात करें, तो perhaps we can discuss it more. ठीक है कि आपको उस सिचुएशन में आंसर yes देना है कि no देना है. अगर if you're confused about that. So suppose कोई straight question आपसे पूछा गया है and you have been asked your opinion और आपसे कहा जाए कि whether you agree with it or you do not agree with it, then simply what our take shall be, we have to give the entire picture of what if we agree and why do we agree, and the entire picture of why do we not agree, and we have to see if there is a midway somewhere कि क्या कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जो हमारा disagreement जो है वो कहीं पर जाकर के वहां पे settle हो. So midway is the answer to most of the things. Yes. Thank you, ma'am. Dear participants, if you have any more questions, you can ask. Please. Yes, you must make use of the opportunity. You won't find the expert every time. Yes. Right. Okay, if there are no questions, then you can conclude, or Professor Anupriya would like to comment something, then you can conclude. No, it was nice to interact with the participants, all of you, and very rightly said, it should be more of interaction. The more interaction there is, the better ideas come, and it is a win-win situation. We all learn through each other. So next time onwards, yes, I would also try to have more interaction. Yes, ma'am. Sure. And we will have some offline program after May. Then we would certainly would like to have you here with us to meet our faculty and students in person. Till May, I think we will do everything online. After May, June, we will have offline programs. Of course. Yeah. Yes, ma'am. With the permission of our Honorable Vice Chancellor, Madam, I would like to go to the conclusion session. On behalf of Training, Placement and Students Welfare Cell of Hindi University, I would like to thank you a lot, Madam. And at the same time, we will request you to bless and cooperate us whenever our students will need your help and kind guidance.
So thank you very much, ma'am. And thank you all to participants and professors who have joined the session. Thank you for the invite. And hope to see you. Thanks a lot. Hope to see you in And Bengal. Dr. Indrajit, congratulations for the first program you conducted successfully. Thank you, ma'am. Thanks. Okay, so may I leave now? I have another session Yeah, somewhere. sure. Thank you so much. Sure, for sure. Thank you. It Thank was you nice. and namaskar. Namaskar. Thank you very much.